Good morning students, welcome to Commerce Camp Odisha. Today we'll start with the remaining part of goods and service tax. Indirect taxation रा मैं introductory class टा already देखे थे लो. सेथिरे मु कहथिली किछि ignored portions जोडारो कि exam रे repeatedly questions आछि. तो please note them and सेडारो किछि bit questions भी आसीबो and direct questions भी आसीबो. Repeatedly आसुछि. Okay, so don't skip them. And this is your बेसिक चैप्टर माने सबुडो इंपोर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर एडार जो कांसेप्ट गुडा अछि भलसे बुझिले तमरो जीएसटी रो अंडरस्टैंडिंग डा भलसे रहिबो बट जदी एडार जो कांसेप्ट क्लैरिटी अछि सेडा जदी न बुझिले कोन हबो परे परे इनडायरेक्ट टैक्सेशन रो लिंक्ड अप प्रोविजन जा बुझिबाडा कष्ट हे जिवो ओके तुम जोडा जोडा लेखो छि ता सहित लेखिबो तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन रे वी हैव लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स levy and collection of tax. So what do you mean by levying of tax? Levying माने कौन हाँ charging very good. तो levying माने का ऊपर actually GST डा apply होची. Okay and collection माने कौन collecting by the relevant authority. Collecting of tax by relevant authority. So levy and collection दीटा जगह कौन सेम जिंसो की नहीं but simultaneous जिंसो. This was a bit question. Levy and collection of tax are simultaneous in nature माने गुट्टे परे गुट्टे हबाव बाध्य आगा. जदि levy होची तो some of the other authority will directly collect that. तो आ पूर्व रे का वेले किछि आईडिया अछि लाइक जीएसटी विषय रे माने केते प्रकार रो हमरो जीएसटी अछि कोन अछि कोन कोन अछि एसजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी आ उटे यूटीजीएसटी वी हैव वेरी गुड वी हैव फोर थिंग्स तो लिखि दियो डिफरेंट कंपोनेंट्स एडा को कोन बोचंदी डिफरेंट कंपोनेंट्स एक्चुअली जो लोक जानु चंदी बट सेडा रो ना जानि परनांदी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी different components of GST. तो CGST, SGST, IGST and UTGST, Union Territory Goods and Service Tax. Okay. CGST सेंट्रल गुड मु फुल फॉर्म लेखुनी फुल फॉर्म तमे लिखि पारिबो बट समस्त तो बुझा पड़ची सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी इट्स नॉट इंटरनेशनल इट्स इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी ओके तो इट इज ए केस रे कोन होची लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट levied by the central government levied by the central government एडा levied by the state government levied by the state government IGST levied by whom? IGST के levy करछि central. Very good. Central government levy करछि but it is distributed among the particular authorities. हाँ 3000. UTGST के levy करछि state कौन? Central government. Okay. सेति पे एडा लेखोछि. एडा होछि bit question हमरो. Levied by the central government. एडा रहबो levy category under रे. Okay. एडा नेम एडा लेवी कैटेगरी ओके तो देखा आ परे गुटे आमे जिंस जानिबा कोन वी हैव इट माने मु लिखि दी ऑलरेडी एडा टिके देखो फर्स्ट रे देन ता पर चार्ट कंटिन्यू करबा इंट्रा स्टेट वर्सेस इंटर स्टेट माने तुमको इजीली बुझा पड़ जाउथि इंटर स्टेट माने बिटवीन टू स्टेट्स इंटर स्टेट्स माने कोन बिटवीन टू स्टेट्स इंट्रा स्टेट माने कोन विद इन द सेम स्टेट
ये जो पॉइंट गुड़ाक अच्छी टिल द एंड ऑफ जीएसटी तुमको बारंबार बारंबार रिपीट होथिबो व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई माने होची लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी एडा टिके बुझो लोकाने यूनियन टेरिटरी की धरी कंफ्यूज होचंदी कि इफ इट इज इन द सेम यूनियन टेरिटरी तो कोडा लागिबो कहि काई सेम स्टेट तो समस्त बुझा पड़छ तो ये गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम यूनियन टेरिटरी तो टैक्स इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एटा तो लिखेबी तमे खाली फिलहाल पे एति की जानो इंट्रा स्टेट सप्लाई माने कोन लोकेशन ऑफ द सप्लायर माने जे सप्लाई करूची एंड द पर्सन हु इज रिसीविंग इट बोथ आर इन द सेम स्टेट इंटरस्टेट माने कोन लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड place of supply are in the different states or union territories or supply involves import or export or supply to or by SEZ zone माने special economic zone special economic zone ओके एबे बुझला इंटरस्टेट सप्लाई कोन इंट्रास्टेट सप्लाई कोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन माने एति की बुझो तमे ता ऊपर पूरा पूरा डिटेल चैप्टर आसीबो तुमको स्पेशल इकोनॉमिक जोन माने जो एरियाज माने अंडर डेवलप्ड अछि फिलहाल पई माने गवर्नमेंट से एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर रे कोन करचंदी रजिस्टर करिचंदी टू प्रोवाइड समथिंग एट अ वेरी कंसेशनल रेट तांको को सपोर्ट करिया पे तांके को रेट रे दोचंदी ना वेरी डिस्काउंटेड रेट रे दोचंदी कम रेट रे दोचंदी तो दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन माने तारो ब्रीफ मीनिंग होची एटा तारो इन डिटेल प्रोविजन ना मैं इन अदर चैप्टर्स देखिबा तो ये कहूची कोन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और सप्लाई टू और बाय एसईजेड माने एसईजेड हमको सप्लाई करले मध्य कि एसईजेड को आमे सप्लाई करले मध्य इट विल कम अंडर व्हिच कैटेगरी इंटरस्टेट सप्लाई बुझी पाला तो एबे कंटिन्यू करो तमे तळगु तळगु मध्ये लिखि पारिबो हाउ इट वर्क्स रे सीजीएसटी एसजीएसटी इमति करिगरे ए चार्ट तुमको एग्जाम आगो दिन लाइक एग्जाम माने जदी अछि तो 10 मिनिट्स आगे कि 15 मिनिट्स आगे जदी यू हैव टू ब्रश अप योर कांसेप्ट्स तो एडा देखिया पड़ियो काहे गेली कले एडा रु आगा तमरो फर्स्ट ऑफ ऑल बेट क्वेश्चंस आसीबो सेकंड थिंग इज प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई ए तीनटा कांसेप्ट जो अछि तीनटा चैप्टर्स जो अछि सब जरा बेस हो जेडा तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फाइन लेखो transactions occurring within a single state or union territory within a single state or union territory the total revenue ता तळे मध्ये लिखि पारिबो कि केमति भी लिखि पारिबो the total revenue is split between two things जेतलो सिंगल स्टेट रो ट्रांजैक्शंस होचे तो कोन होचे से टाइम रे the total revenue is split between two things what is it CGST and SGST तो से केस रे कोन होची सीजीएसटी जोड़ा अछि सेडा के कलेक्ट करची सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करी सेंट्रल गवर्नमेंट ए पोर्शन करबा आ जो एसजीएसटी पोर्शन रो जो रेवेन्यू डा अछि सेडा के नबा स्टेट गवर्नमेंट नै जिवो ओके सेम जिनस लिखो एसजीएसटी रे transactions occurring within single state or union territory
union territory. Same na, obviously सेटा कत लिखा है दीटा जहाँ पे सेटा टोटल रेवेन्यू इज स्प्लिट बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को केस रे एराइज होची सेटा जानिबा दरकार माने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जेतळो हबो टैक्स कलेक्ट होची टैक्स टा को बिटवीन सेटा डिवाइड होची जा प्रपोर्शन से नहीं होची सेंट्रल गवर्नमेंट रो शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट नो शेयर स्टेट गवर्नमेंट रो शेयर स्टेट गवर्नमेंट नो संतोष नो बैग रे स्कैनर टच के पड़ी ओके आपर प्रॉब्लम्स मध्ये थिबो मो साना साना प्रॉब्लम्स टू स्टार्ट करिवि थैंक यू फाइन तापर देखो आईजीएसटी ओके लेखो एडा supply of supply of goods or services supply of goods or services supply of goods or services between different states or union territories or includes exports and imports कौन है ना तो IGST is एडी लेखा continuation IGST is sum of rates of CGST and SGST sum of rates of CGST and SGST okay ଏବେ ଲେଖ UTGST so UTGST is a tax on supply of goods and services within certain union territories it is charged alongside CGST for intra-territory. This word is very important. ए जिनस को धरिकी क्वेश्चन आस्थिला एग्जाम रे इंट्रा टेरिटोरी कोन पिलाने बुझी पार नथिले यूनियन टेरिटोरी वर्ड रे जदि टेरिटोरी अछि तो इंट्रा टेरिटोरी माने कोन अमंग द यूनियन टेरिटोरीज बुझी पारला ना नहीं सेम टेरिटोरी भितरे charged alongside for intra-territory transactions तो जदि हबो तमरो एग्जाम आगरे और एबे नाउ इटसेल्फ यू हैव टू राइट द एप्लीकेबल टेरिटोरीज आल्सो एप्लीकेबल टेरिटोरीज जदि तमरो एडी रहिला ही पारे जदि टेरिटोरी को तमे जदि चिन्नी पारलानी कि ए टेरिटोरीटा यूनियन टेरिटोरी अंडर आछि कहि ए पर्टिकुलर जागाडा यूनियन टेरिटोरी अंडर आछि कहि तुमको मन नै जदी तो पूरा जो तमरो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करियो कि जीएसटी जो कैलकुलेट करियो सेटा पूरा डिफरेंट हे जिवो किबा रॉन्ग हे जिवो तो बेटर हबो कोन ता तळे आगे लिखि दियो एप्लीकेबल टेरिटोरीज ओके तो नेक्स्ट हेडिंग दे परियो किबा कंटिन्यूएशन करो एप्लीकेबल टेरिटोरीज
मते कहि परियो कोन एप्लीकेबल टेरिटरीज कोन यूनियन टेरिटरीज दिल्ली पौंडीचेरी दामन दीव ओके तापरे नो so there is powers that differ Andaman Nicobar is not there हे अच्छी अच्छी अंडमान निकोबार आइलैंड्स अच्छी तो सेडा कोची कंफ्यूजन थाउची को चंडीगढ़ लेखा जो जो जिनसे क्वेश्चन रे आसुची से जगह स्पेशली लिखि दउची 700 हां दादरा कौन है हाँ ही या ए बहला थैंक यू the four slabs of GST की कोई परिमो I asked you टिके रिवाइज करिके आसिए कांसेप्ट गुडा four slabs of GST present चारटा स्लैब अब अच्छे हमर हां 8 ओके 8 नहीं तो 5% F बर्तन 12% or 40% only 4 are there 12 5% 12% 12 नहीं बाबा 12 eliminate he eliminate he 5% 18% 40% yeah 0 5 18% and 40% 0% yeah ठीक है तो we will study about the zero rated supply also हैला 0% 5% 18% and 40% सेटा लिखिबो काहेकि एडा पचरिबो काहेकि लेटेस्ट ना 12 and 28% are excluded from the slab rates now जानिथिबो if you don't know तो मन रखो दीरा जो जिंस कोन हमरो exclude ही जेची कहि तो राइट डाउन chapter रो आइता रिवाइज करू 4 slabs of GST ए हे टिके धीरे प्लीज फर्स्ट पेज रिवर्स 4 slabs of GST कौन है कौन प्रॉब्लम आ कौन भूल अच्छे एतरे लक्षद्वीप कौन दादरा नगर हवेली so that nine लक्षद्वीप आगुर लक्षद्वीप मिक्स कर देछि कि फाइन दादरा नगर हवेली और डामन एंड दीव होटल लिखिस हेई थिबो एंड लिखिछि मु सेटा पॉइंट वाइज करिके लिखि देछि पैराग्राफ रे तो लक्षद्वीप मु मिस कर देलेनी
Fine, then mo numbers हटे दो. That is better. Question मु कहूची कि देखो तुमको question रे at least ए ना जा देखिला ने लागिले you will be at least alert that you are dealing with union territories कहगी. The purpose is that even मते भी जाना नहीं मु admit करची कि मो union territories रो ना रे बहुत weak अछि तो I am saying that ए जो paragraph अछि तुमको जदि ना जाको visible हला question रे you have to be very alert that you are dealing with union territories and in future when you are dealing with the rates तमे एडिया का कोन करी पेपर टेस्ट करकी ता rates मध्य लिखि दबो. The next question is 4 slabs of GST कोन हमरो 0%, 5%, 18% and 14%. So what is excluded? Excluded कोन एडा मध्ये question आसीबो कोन ना products नहीं slabs 12% and 28%. Okay. Next important question in this chapter is what is a HSN code? सुनथि बनाडा HSN code. Product code जागो HSN code. ता तळे तळे करिके लिखिबो HSN code. Harmonized system of nomenclature. So you must be knowing मुगुडे जिनसे brief कर दोची you have direct tax 50 marks and indirect tax 50 marks. तो एथरे जो 50 marks अच्छी we have only few bit questions. सेथरे बहुत questions repeat होची तो जो questions repeat होची I am making you right. एबे जो latest amendments आछी किंबा जो जिनसो नोआ रे add और exclude हेची से जारु तमरो major portion question आसीबो तो सेडा मु लेखे देली ए दिडा possibility अच्छी कोडा गुटे आसीबो. And second thing is what is a HSN code? It's asked as a short question also. तो ए chapter related तो मु लेखे दोची. HSN code माने कोन? It's a harmonized system of nomenclature. एडा कोन? Code essential for GST in India. For GST in India to categorize goods on their characteristics, and facilitate uniform taxation It ensures tax calculation and compliance. With GST regulations. With GST regulations. इतकी बुझला most important questions मु अलग रे लेखो छी अगेन मु कहू छी नोटबुक रे only brief things and exam आगे जो जिंस देखियार अछि से जा रहबा पड़ियो that will depend on you. Fine लेखि सालो सबु okay. एबे देखो CGST applies to intra-state supplies when supplier and place of supplier in the same state or union territory. Tax is levied as CGST plus SGST or UTGST. तापरे applies to interstate supplies when supplier and place of supplier in different states or import or export. Tax is levied as IGST. तो simple words रे कोन जदी same state रे transaction होची you have SGST plus CGST. different states रे होची तो only IGST. okay एतिकी बुझला. एबे हमें देखिए most important definition that is supply. कोडा आसुची हमरो purview under the GST को. only supply under जोडा आसिला only those transactions will come under the purview of GST. The supply is the
taxable event under GST. What is the taxable event? Supply. आम्ही जानथिलु GST is a consumer based tax or consumption based tax or destination based tax. We discussed three things. But direct tax कौन हमरो? It's a regressive कथा नहीं, income based tax. तमे जेति की earn करलो ता ऊपर तमे tax payment करिवो. But GST रे कोन तमे जेति की consume करलो ता basis रे करिवो. तापरे supply is the taxable event under GST. Supply रे कोन कोन आछि देखो three things. All forms of supply of goods or services such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal. एतिकी जिंस से include करची. Very important. Sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal. Sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal. Made for consideration, number 1, in the course or furtherance of business. Number 2, most important portion. ठीक है बुझो. Sale माने बुझो ये selling something. Transfer माने transfer करिया. Transfer माने you're actually rights का गुड़े दोचो कि ownership दोचो कि possession दोचो somewhat transfer under है सेड़ा. Barter माने something like exchange. तो barter and exchange. Okay. License माने permission. Lease माने पर particular type of rent. Rental माने license रू टिके कम. तापरे lease or disposal. Disposal माने you're disposing of or you're actually relishing the rights. बुझी पाता ना नहीं. You're disposing of a proportion माने किछि portion ला तमे यूज करनो किंबा dispose of कर दोचो, discard कर दोचो किंबा कोन करचो पूरा portion रे discard कर दोचो. तो एतिकी सबो दीडा जिंस पे हेबार अछि. Made for consideration in the course or furtherance of business. Made for consideration in the course or furtherance of business. Consideration माने कोन? We have studied in law माने monetary purpose पई किंबा किछि return rate हेबार अछि. And second thing is in the course or furtherance of business. ए वर्ड ता तुम बारंबार देखिबो. ITC chapter रे देखिबो, competition scheme रे देखिबो, अलगा chapters रे मध्ये देखिबो. business रो involvement ता निहाती दरकार गोटे GST levy हेबा पई. So three things: sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made for consideration in the course of furtherance of business. तापरे import of services for consideration whether or not in the course of business. Very important. देखो जल्दी import करूचो services consideration देगिरी business purpose पे नहीं तो compulsorily कौन लागू होबो ता ऊपर GST supply under सेडा पड़ा आसुची. एडा कांगी अलगा रे देला से देई पारथांदा import रे business proposal बुझी पाला ना. एडा business purpose पे नथिले मध्य कोन course of business रे न करले मध्य जदि consideration पे import करछ कोन goods नै से कोन कहला first रे पर्तन को कोन कहै छै services कहै छी. So this will come under the purview of supply under section 7. तापरे activities specified in schedule 1 treated as supply even without consideration. देखा first point रे आमे देखिलु तीनटा जिंस कोन ना एतिकी elements plus consideration plus business purpose. Three things we have seen. Second रे से कहला कोन consideration थिले हैला बाकी business purpose पे न हैला मध्ये चलिबो. Third रे से कोन कहछ activities consideration नथिले कोन हबो फिर भी supply under रे कोडा कोडा आसीबो. बुझी पालम. तो activity specified in schedule 1 एडा होचे हमर कोन supply रो definition डा. तो supply रो definition डा जेहेतु vital माने ए भीतर को enter करला का GST भीतर को जेहेतु entry करि परिबो तो supply रो definitions रो हमको गुडाय questions आसुछ. तो तुमको जहां बुलेबो सी first point रागा बुलेबो. तो anyone having any sort of doubts? नहीं. तो एडा कोन ए जो सप्लाई डेफिनेशन रे हेची इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस माने तमे जिमिति भी जदी कमर्शियल पर्पस पे जो भी ट्रांजैक्शन अकर करूची से सब जिंस गुडा कोन सप्लाई अंडर रे पडास हैला. एबे देखो आई हैव गिवन सम कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स ऑन इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट एंड सप्लाई एस्पेक्ट. A manufacturer in Delhi sells machinery to a trader in Delhi.
कौन हबो एटा तमरा टेक्स्ट बुक रो एग्जांपल टा से कोन कंसीडर करछ बुझि पाला SGST same manufacturer in Delhi sells machinery to buyer in Mumbai interstate directly IGST ए जगह तुम क्वेश्चन रे आसी हला माने से कहयो इमती इमती हेची एडा पचारिबो a manufacturer in Delhi sells machinery to a trader in Delhi तो को टैक्स टा एप्लीकेबल हबो बस स्ट्रेट क्वेश्चन ए दिरे त हम डिस्कस कर देछे एबे देखो सप्लाई एस्पेक्ट टा the sale is a supply because it is a sale of goods made for consideration in the course of business देखो सेंट्रल टैक्स कोन ऑलरेडी मु चार्ट बनै देछि तो मु खाली रिवाइज करछि a trader in Hyderabad sells goods to a customer in Warangal the location of supplier कोन place of supply कोन तो इट्स अ इंट्रास्टेट सप्लाई तो मु एजा कोन पे देछि तुमको फॉर्मेट बुझिया पे तुमको जो क्वेश्चन आसीबो टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई रो जो क्वेश्चन जागो सेजा सब कोन तमे को फॉर्मेट रे लिखिबो सेटा बुझिबा पे तो फर्स्ट गिवन रे लिखिबार अछि कि ट्रेडर कोडी अछि सप्लायर कोडी अछि रिसीवर कोडी अछि रिसिपिएंट कोडी अछि एटा कोन सप्लायर एटा होची रिसिपिएंट यू शुड नो द वर्ड्स कस्टमर को हम कोन कहूछु रिसिपिएंट कहूछु सप्लायर को नो रिसिपिएंट कहूछु कस्टमर को के कोन कहि परियो सप्लायर कहि परियो चापड़ा पकी दानी कस्टमर सप्लायर को कोन कहले से तुनी रहियो कौन दो जो सेटा से कहियो सप्लायर इज इन तेलंगाना रिसिपिएंट इज इन तेलंगाना तो कौन हैला तो जेहेतु दीड जा जिंस सेम तो इट्स इंट्रा स्टेट सप्लाई तो कोडा लागू होबो CGST एंड SGST तो एडा बुझो जदी 18% ओवरऑल अछि तो 99 तमे जानचो किबा SGST रे 9% CGST रे 9% जदी कहलो तो ऑन टुगेदर से केते परसेंटेज दोउची एडा जदी मूर्ख नळिया पिल्ला जागो लेखि के आसीबे कि ऑन टुगेदर से केते दोउची टैक्स तो 9% जदी कहउची 9% देई से मानु बांटी देली कहले से कोन चांदा दोउची 9% ईच कहइची से कांसेप्ट गुडा माने मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट क्लियर टिल नाउ आउट फाइनल लेवल रे क्लियर करियो हकोनी बुझि पाला त से कहउची टैक्स ता कोन कहले IDT हां इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट 100 मार्क्स रो खाली IDT custom and FTP foreign trade policy also is there indirect taxation पूरा गुड सब्जेक्ट तो से कहउची जदी तुम क्वेश्चन पचाला कि ईच को केते दोउची इट्स 9% ओवरऑल टैक्स पेमेंट से केते परसेंटेज कहउची इट्स 18% ओके इंटीग्रेटेड GST देखा levied by central government on interstate supply of goods or services a trader in Hyderabad is Telangana state गुडा को जाने पड़ियो again whoever is weak like me in states capitals okay I am also very weak तो से बड़ बड़ एमती अजीब वाला किछि दबनी हैला चेन्नई कोन तमिलनाडु कोन कहले जानथि आगा दबो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज नॉट सेम एज प्लेस ऑफ सप्लाई तो इट इज इंटरस्टेट सप्लाई तो IGST ओनली एट द रेट 18% तेमती का सेम इंटरस्टेट रे कोन CGST स्प्लिट बिटवीन जहा भी टैक्स अछि कौन कहले हां मोर एग्जांपल नै तमो क्लियरली कोआ हबो कि केते परसेंटेज टा लेवी हबो कहि के ए के कागो जज करिवानी बिकॉज़ इफ वी आर जज तो से टाइम रे इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट तो बेटर बी आमे साइलेंट रहि जिबा ओके फाइन exempt supply देखा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 supply of goods or services attracting nil rate of tax or wholly exempt तो तुमको खाली गुट्टे क्वेश्चन पचारिबो कि से एलिमेंट देकी पचारियो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द exempt supply कहिगिरी आ किछि भी क्वेश्चन एबे जेई से exempt supply को धरि के आसनी तो ओनली एग्जांपल पोर्शन इज इंपोर्टेंट fresh fruits vegetables education services are exempt from what GST if a tuition teacher collects 10,000 no GST is charged
हैला तो ट्यूशन टीचर जदि 10,000 कलेक्ट करछन ता ऊपर कोन जीएसटी पड़ियो पड़ियो हसछु कोन पे कोन चप्पा ट्यूशन को देबो 100 टाका हां हां say that you can't escape something, right? Okay, taxable supply gonna supply of goods or services chargeable to tax under GST. Basic मु जिनसे उड़ा कहूची selling t-shirts केते 18% GST. अजित तमे जिंदी कहला this is the slab rate. The slab rate mention हबो no worries तमु कुआबो कि कोड ऊपर केते percentage पड़िबो कहिके हैला future chapters आसीबो. Selling t-shirts 18% GST taxable supply. Renting commercial properties is also a taxable supply. माने कहले कोन जो जिंस ऊपर जीएसटी अंडर रे टैक्स पड़िबो दैट इज अ टैक्सेबल सप्लाई. नॉन टैक्सेबल सप्लाई माने जीएसटी जा ऊपर लेविएबल नाही. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पेट्रोल डीजल एजा सब कोन जीएसटी परव्यू रे नाही कि केबे आसीबोनी. आउटसाइड जीएसटी ऊपर कोन लागू होची एक्साइज ड्यूटी प्लस व्हाट एक्साइज ड्यूटी प्लस व्हाट लागू होची. Petrol diesel ETP GST will be applicable only after government notification. तो टिके बुझो अल्कोहलिक लिकर पर ह्यूमन कंजम्पशन को से कहूनी कि केबेल जीएसटी परव्यू अंडर आसीबो कहिगिरी. बाकी के कथा होची पेट्रोल डीजल एटीएफ जोड़ा अछि सेउडा कोन गवर्नमेंट जदी नोटिफाई करियो तो दे विल कम अंडर द परव्यू ऑफ इंडिया. माने कोन इंडिया इंक्लूड्स व्हाट अंडर दिस डेफिनेशन. These are coming in the bit questions, okay? That's why. Territory of India as per constitution. तमु पचारछि से territory of India माने कोन को एक्ट अंडर रे मेंशन हेले इंडिया डेफिनेशन भितर को आसुची. तो जेहेतु बहुत कम क्वेश्चंस आसीबो बिट क्वेश्चंस रे से क्वेश्चन गुडा को बहुत माने जे गेस न कर परला वाला जिंस पचारछि आ पचारछि आज तो पढुछि आ हां territorial waters 12 nautical miles 12 nautical miles from the baseline. Seabed, subsoil, continental shelf, EEJ, airspace above. Okay. कौन 3 नंबर टा खाली मन रखी बसे जा सब इसे जो सब जो सी पाखर जो थिबा जिंस गुडा ए काई दोछ म बस न उड़ जाकर जाई रे खुडो खाड़ो डिस्टरबेंस खाली. Place of supply provision depends on whether supply is within India or outside India. Hella that's why India definition is important. UTGST again mu dechi dekha. Goods supplied within Chandigarh. CGST plus UTST सेमिति से दिल्ली यूनियन टेरिटरी अंडर देछि नाम वो नॉर्मली. बाकी दिल्ली को इंस्टीट्यूट केबेल यूटीजीएसटी अप्लाई करियो दोन तो टिके सेडा मन रखिबो इंस्टीट्यूट कंसीडर करूनी सेडा. आमे फर्स्ट एग्जांपल रे जोडा देखिलु मु भाबिथिली कि पचारियो डाउट तो इट्स कंप्लीटली अप टू द इंस्टीट्यूट की कोन कंसीडर करे. अरे एडा नाइ म एडा मु एप्लीकेबल एडा मु खाली टिके टिके देछि ना एप्लीकेबल टेरिटरी म अलग रे लिखिछि. एडा मु अगेन टैक्स पॉइंट हिसाब रे देछि सप्लाई डा सेडा मु ब्रीफ डेफिनेशन देइथिली माने ब्रीफली एडा तमर इन डिटेल डेफिनेशन डा कवर्स एवरी पॉसिबल फॉर्म ऑफ सप्लाई. Goods or services are both consideration money or kind in course or furtherance of business. तुमको जदी देखिबार प्रॉब्लम होछ त मेडी आसी बसनो से तांको पाखरे इट विल बी बेटर तुम टिके देखियो इजी हबो. सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस रेंटल लीज और डिस्पोजल मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसीडरेशन. माने कहले कोन कंसीडरेशन रो तीन टा जिंसो कंप्लीटली कंसीडर करछि. 3 टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन कोन 3 टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन कोन रे काय बाडी का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन टाइप डा हम कौन पचारली तू मत पचार दो जोतरे
बिजार नहीं अकाउंट पे 3 टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन कौन प्रेजेंट कंसीडरेशन माने जोड़ा एबे पेमेंट हे जी पास्ट माने एबे एबे जो पेमेंट हैला एबे जस्ट जोड़ा हैला दैट इज प्रेजेंट पास्ट माने जोड़ा ऑलरेडी हे जी फ्यूचर माने इट इज अग्रीड टू बी मेड तो सप्लाई डेफिनेशन अंडर रे केते प्रकार कंसीडरेशन कंसीडर होची 3 टाइप्स ऑफ कंसीडरेशंस आर कंसीडर्ड by a person in the course or furtherance of business एडा मैं जानचू supply is a taxable under GST at the time of supply okay a trader sells furniture for rupees 50,000 to a customer so it's a present consideration and is in the course of business so taxable supply under GST बुझले एतिकी import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business import of services always supply if there is a consideration Number 1, import may be personal or business related. There is no restriction. माने कहले कौन import of service जोड़ा अच्छी सेटा consideration पे ही थियार अच्छी इम्ति नहीं गुड़े सांगोड़ा कापे इंदी मजा मजा रे सर्विस पठे देला सांगोड़ी ये सर्विस रे import कर देलानी consideration किछि भी नहीं कि business किछि related नहीं तो सिमितिया जिनसे supply under आसनी जदि consideration aspect अच्छी then सेटा supply under रे आसबो RCM कौन हमें देखिबा tax payable under reverse charge mechanism by the recipient in India. Normally tax किए pay करछे ने? हाँ? India लोको. This is GST भाई. GST रे tax किए pay करछी? हाँ हाँ. Sellers ना? Okay. Sellers. Okay. Sellers are suppliers. India लोको. Answer भूल ले भी मैं कोई पर नहीं. तू जिन्हें answer जाता हूँ चलना. Okay. वेरी माने कौन कहउचंदी कॉफी पीला वाले आंसर जाय जा सब दिमाग की बत्ती जल जाए हां एक्जेक्टली माने डेफिनेशन अंडर पड़ाछ तो रिवर्स चार्ज रे कोन होची जे रिसिपिएंट अछि से टैक्स पे करबो रिवर्स चार्ज इज अ कंप्लीट चैप्टर हमें देखिबा अ पर्सन इन इंडिया पेज $100 टू अ फॉरेन आर्किटेक्ट फॉर प्रिपेयरिंग हाउस प्लान फॉर हिज पर्सनल रेसिडेंस दो नॉट बिजनेस स्टिल टैक्सेबल एज सप्लाई IGST अंडर RCM हैला तापर देखो सेक्शन 71C last topic for today please be attentive and it involves a lot of questions 71C रे कोन आछि हमरो activities that are deemed supply बहुत बिट क्वेश्चंस आछि बहुत माने वैल्यू ऑफ सप्लाई रे बहुत थरे एडागा एलिमेंट रो पचाछ deemed supply माने कोन these are considered as माने compulsorily सिजा supply even if no consideration is involved माने एडी consideration aspect नहीं फिर भी कौन करचंदी number 1 permanent transfer or disposal of business assets where ITC has been availed so what is ITC input tax credit simple language रे जदी बुझियार अछि कहले what is ITC normally जतोड़ कोन कहि ना हस्छ आईटीसी माने कंपनी अच्छा अरे देखो सेटा भी भूल आंसर नहीं देखिलो तो आईटीसी माने कोन जेतोळ को टैक्स पेमेंट ही जेची सम और द अदर पर्सन एडा रे हम देखिलो कोन इट अवॉइड्स डबल टैक्सेशन तो जदी गुटे लोक पूरा टैक्स पेमेंट ता करची तो आउथरे से पोर्शन कोन आ गुटे लोक पे करबो कि सेति की तो डिडक्शन ताको मिलिया कथा ना ता पोर्शन रो डिडक्शन ताको मिलिया कथा ना तो से जो क्लेमिंग होची डिडक्शन जो क्लेम करछो ताको हम कहछो कोन इनपुट टैक्स क्रेडिट कहिगी सेटा गुटे इन डिटेल चैप्टर विल सी गुटे ब्रीफ आईडिया बे दे देली तो से फर्स्ट पॉइंट रे कोन होची परमानेंट ट्रांसफर परमानेंटली से ट्रांसफर कर देला कागो और कोन करला डिस्पोज ऑफ कर देला ऑफ व्हाट दिस इज द मेन पॉइंट बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड माने ताकू जेति की बेनिफिट डिडक्शन टैक्स रो नबा कथा सब से नै जेची नेला परे से कोन करची ए जागो ट्रांसफर कर देची किबा डिस्पोज ऑफ कर देची The business assets on which ITC was claimed are permanently transferred or disposed of, माने donated, given free of cost, personal use पे से नहीं जोची तो जहाँ भी जल्दी हबो तो कौन हबो सेडा supply under a treat ही जिबो and सेडा उपरे GST लागू ही जिबो तो goods section 12 under a time of supply of goods सब determine हबो liability arises when asset is removed or disposed okay liability केबे arise हबो जेतल को एसेट टा डिस्पोज होच ठीक अछि देन a company donates machinery ITC was availed earlier to a school GST payable on the market value of machinery
ओके से डोनेट कर देला डिस्पोज ऑफ कर देला ता ऊपर कोन से आउ थे टैक्स बेनिफिट नहीं जेछि बिजनेस को यूज करी कहिग्री सेते पे एबे कोन होबो जीएसटी डा लागू होई छै बुझिला supply of goods or services or both between related persons or between distinct persons in course or furtherance of business तो related persons माने के director relatives partners employer employee सब maximum related persons definition जोड़ा हमें बेजे पढ़ुछु सेडा same legal entity with multiple GST registrations बुझि पालो different states रे different registration से करथिबो तो से केस रे कोन हबो these are distinct persons तो से कहछि supply of goods or services or both between related persons and distinct persons in course or furtherance of business से माने कोन कोइ हम भीतर त हम काई टैक्स पेमेंट करू बोले से कहछि नै सप्लाई अंडर आछि माने आसुछि बिकॉज़ गुट्टा द रीजन इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आ रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पार्टीज रे कोन अधिक घपला हबो काहेकि अधिक पैसा तांके एपट से पटे कर देबे जेते चार्ज करले से के देखिबोनी बट जदी सेटा टैक्स पर भी अंडर को आछि दे विल बी वेरी अलर्ट इन डीलिंग विथ इट बुझिला हेड ऑफिस इन दिल्ली ट्रांसफर स्टॉक without charging money to its branch in Maharashtra different GSTN dira different GSTN अछि तो consideration absent but IGST is payable से consideration देइनी किछि करनी बट एटा कोन से बिजनेस पर्पस कोई कोन कर देला स्टॉक पठेला बुझी पाला ना नहीं स्टॉक पठेला डिफरेंट स्टेट को तार डिपार्टमेंट को तो एडी कोन हबो ऑटोमेटिकली एडा सप्लाई पर भी अंडर रे पळासिबो काउ डाउट अछि किछि नहीं supply of goods देखो by a principal to his agent where the agent undertakes to supply goods on behalf of the principal or by an agent to his principal where the agent undertakes to receive goods on behalf of the principal तो meaning देखो transfer of goods between principal and agent is taxable even without consideration बुझी पाला जदि प्रिंसिपल और एजेंट भितरे गुड्स ट्रांसफर होची तो एडा कोन कंसीडरेशन थाउ न थाउ टैक्सेबल हे जिवो a manufacturer principal sends goods to his consignment agent without charging money GST payable on the value of goods supplied similarly agent sending back goods to the principal GST is payable बड़े ना ना सेम जिंस नहीं अलग जिंस बुझी पाला ना नहीं obviously टैक्स जहा हमरा हेची सेडा एमिति डिजाइन हेची कि गुट्टे जिंस ऊपर के जेमति गुट्टे लोक आगा देबे जे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स obviously बुझी पाला ना नहीं तो देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस if an Indian entity receives services from its foreign branch or related party it is taxable even without consideration माने आउटसाइड इंडिया से कोन हेतिबो इधर तार ब्रांच हेतिबो नले ताको रिलेटेड पार्टी हेतिबो से जदी कंसीडरेशन न थे कि इमिति आगा जदी देई देला तो से जिंस ऊपर कोन टैक्स लागू हे जिवो टैक्स पेबल अंडर आरसीएम जे रिसीव करला ऑब्वियसली से आउटसाइड इंडिया जे अछि ताको तो जाय हम टैक्स मागी पारियानी जे रिसीव करला से लोक को हमें धरिबा से लोक को हमें कोन करबा टैक्स पेमेंट पे मागीबा एन इंडियन कंपनी uses accounting support services from its branch office in the USA free of cost IGST is payable in India under RCM तो तुमको मेजर क्वेश्चन सेडा रे कोन कोन आसीबो मु कहि दोची ए तीनटा पॉइंट्स रे हमरो जो छ 1 2 3 एंड 4 तुमको पचारिया फर्स्ट ऑफ ऑल जदी से लागू करला को टाइप ऑफ टैक्स टा पड़ेबो जेमति ए केस रे IGST ऑलवेज भाई इंटर स्टेट हेले आगा जदी IGST पड़ची आउटसाइड द कंट्री हेले कोन पड़ियो नंबर 1 नंबर 2 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हेले कहले कोन पड़िबो IGST आगा पड़िबो नंबर 2 होची के पेमेंट करिवो रिसिपिएंट ना सप्लायर रिसिपिएंट पेमेंट करिवो तो डायरेक्ट क्वेश्चन सिमती आसीबो तो से टाइम रे यू कैन नॉट बैक एनालाइज दैट थिंग तो ए टाइम रे जतो पड़छो ता संगे संगे ता पाखरे नोट डाउन करियार अछि जोडा कि म ऑलरेडी दे देछि बट फिर भी करिवो तो तुमको एडा मो देछि बिट क्वेश्चंस पर्पस में 7(1)(a) कोन डील करछि एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई विथ कंसीडरेशन एंड इन कोर्स ऑफ बिजनेस एडा कोन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन इवन फॉर पर्सनल यूज माने बिजनेस यूज नथिले लेले सर्विसेज जदी इंपोर्ट कर दोछि फॉर कंसीडरेशन सेडा मध्ये तापर सर्टेन सप्लाईज इन शेड्यूल 1 विदाउट कंसीडरेशन स्टिल टैक्सेबल
तो एटा जो लास्ट प्रोपोर्शन टा अछि सेटा वेरी इंपोर्टेंट जदी काउ किछि डाउट अछि पचारो तो फर्स्ट केस रे कोडा पड़िबो को टैक्स पड़िबो डिपेंड करछि इट डिपेंड्स तो तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन एडी आसीबनी तो पेमेंट के करबा रिसीव करला रिसीव करला कोन पे सी तो बेचारा ताको डोनेट करथियो गोटे तो ता ऊपर टैक्स पकोचो से डोनेशन इमती नहीं थियो देखुथियो टैक्स दियो कहले कोन भल लागियो मते को दिल बेचारा तो एडी सप्लायर बुझी पालो तो किछि डाउट्स नहीं ठीक अछि रिमेनिंग थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच